स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
ओ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। Okay, so good evening everyone. स्वागत है आप सभी का। So after a long gap for the people those who were not there, and after a few days gap for the people those who were there in the 9-day sessions, and all those who were there, they know it was hell of a ride, and those who were not there, they also know it should be a hell of a ride, right Shashi ji? What else can we expect? Because we don't take anything less than hell, and then we transform it into heaven. Now Aditi ji, I was about to start this session and one question popped up. Why do you make us cry so much? Pranit, आपका मैसेज था वो? नहीं? Okay. So why do you make us cry so much? And then I replied, because I want to give you eternal happiness. So I believe that makes sense. पूछते हैं कि आप हमें इतना दुख क्यों देते हो, इतना क्यों रुलाते हो, तो हम कहते हैं कि हम आपको रुलाते इसलिए हैं ताकि हम आपको असीम गम्य आनंद की अनुभूति करा सकें. So as it being a question and answer session, it started very well, I believe. So I am missing Rajanji's towel on his right side because we say look same together. Chalo. So let us begin with Janesh ji. Janesh ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सबसे पहले तो धन्यवाद। हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि 9 दिन तक आपने हम लोगों को सहन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई थॉट द अदर वे अराउंड। आया आपने हमको सिखाया कि टॉलरेंस क्या रहता है। ओके। अब गुरुजी, नियति, नीति, नियत और नीतिमत्ता, ये चारों के अंदर बैलेंस कैसे रखना? धर्मव्याद की कहानी आप शायद चौथी बार सुने। नहीं नहीं ऐसा है गुरुजी, एज ए स्टोरी इट इज एक्सलेंट, लेकिन कहीं न कहीं तार खींचता है तो दुख होता है। किसे? whom? वो जो तार खींचता है वो तार को। who pulls, who gets sad, who gets irritated? कौन? किसकी बात कर रहे हो आप?
जनेश शाह जी की, नहीं या उस आत्मन की जो कभी था ही नहीं? नहीं, वो जो मन जिसको अभी तक इस तरफ बैठ के शांति से बैठने की आदत नहीं पड़ी है उसको, तो उसको वो आदत कैसे डलवानी? ऐसे ही लाके बिठाते रहो। वो हमेशा जरूरत उठ नहीं। के यहाँ आता ही है। सी आपने हाथी देखा है? एलिफेंट हम्म, छोटा जानवर है क्या इंसान के हिसाब से? नहीं। बहुत बड़ा है, बलशाली है ना। इफ इट वांट इट कैन जस्ट turn a human around its trunk and throw it away, kill it in a moment. ट्रू। True. But how does it come into the grip of a human? मनुष्य के हाथ से कैसे ट्रेन हो जाता है? मनुष्य कैसे उसे अपने काबू में कर लेता है उसे? हाउ? उसकी संभावना को हम शून्य कर देते हैं। उसकी संभावनाओं का आप शून्य कर देते हैं। आप अपने मन के संभावनाओं को शून्य कर लो। गुरुजी। हाँ जी। से आंसर नहीं, आप दे रहे हो, मैं थोड़े ना आंसर दे रहा हूं। मैं खाली आपको दिखा रहा हूं कि आंसर आप ही के पास है। आंसर पक्का, अभी रास्ता दिखाओ। आप मुझे मन दे दो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। मन आपकी ही के पास है, तो फिर आप क्यों परेशान हो? क्योंकि वो जब आपके पास ये वही भेजता हूँ तो वो साला क्या बोलते हैं उसको, वापस भाग के आ जाता है। हम्म, बहुत मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि साधना से, आपकी कृपा से आज की तारीख में उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना, ये सब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन जो आपने सिखाया वैसा अगर आजू बाजू का जो वातावरण है जिसको मैंने हस्तक्षेप नहीं करना है, ना उससे अपेक्षा रखनी है। ओके। अब अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, अपेक्षा नहीं करता, तो वो जो वातावरण भीजता है उस वक्त कठिनाई होती है। ओके। और वो वातावरण तो नियति है। कैन आई टेल यू लाइटर थिंग ऑन दैट? पता नहीं, हाँ। आपने ये कहते कहते मुझे याद आ गया। आई थिंक लाइक दिस गोज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ऑफ अस, हम्म, majority of us. I cannot say all of us. Majority of us. हम्म, There was a person in whose house a cat goes every day. एक बिल्ली घुस जाती थी रोज। A cat every day goes and throws away things, drinks the milk and all those stuff, continuous. And he got irritated. So one fine day he caught hold of the cat. पकड़ के लेता है, बिल्ली को पकड़ लेता है और उसको जाके दूर कहीं छोड़ के आता है। But before the time he reaches the house, the cat has already reached the house. हम्म, Now he said, okay, so this was not far enough. So the next day, what he does, again catches hold of it and again goes with that. More far. Happy today. Returns back, the cat is already at the home. One fine day, put it into a bag, tied is so that it cannot see, takes it far away, roams around the village, puts it, comes back, the cat is already there. And one fine day, he said it is enough. And this time he takes it to a forest, deep into the forest, and leaves it there. But after some moment, he starts searching for the cat there. वो जंगल में वो बिल्ली को ढूंढने लगता है. For hours he has been searching. And then by his luck, a woodcutter, एक लकड़हारा उधर से जा रहा था. He said, what are you searching in this jungle? It is about to be evening. What are you searching? No, I am searching for my cat. He said, why are you searching the cat? No, because I have forgotten the way back home. बस वो
अब बिल्ली मिले तो मैं घर जाऊं. Can you see? That's what you are saying to me. मैं अपने मन को आपके पास छोड़ के आता हूं, लेकिन मैं आने से पहले मेरा मन मेरे पास पहले आ जाता है. It is already there. Despite it takes time for me to reach back home, but it is already there. So जनेश जी, पहले तो ये सोचो समझो इस बात को. See, when you are in this world, you need all those things. But the question is, do you need them or they need you? No, nobody needs anything. Then who is bound to whom? I am bound to my own observation of not to observe. Observation of not to observe is also an observation, right? Yes, and that is the problem. Okay, so where is the problem in observing? No, but I am not supposed to observe, and then it is getting observed. Then change the observation pattern. What is the observation pattern that you are using? आप किस तरीके से देख रहे हो उसे? Can you see? Instead of observing, even disappear that observation. You remember that you use a thorn to take out the thorn and then throw away the thorn. So first of all, in order to bring a balance within you, use the observation technique. When the observation has happened, now throw away the observation itself. Now, how to throw away that observation? We did the exercise for that. First of all, you look at a thing from a far off place. दूर से किसी चीज को देखो. And then while looking at that object, now come to the point from where it is seeing, not the distance, not the object, from where you are seeing it. And then in that perspective, the seer cannot see himself. So the observation also drops. What happens in that place? In that place, you have to close your eyes. If you have to see your own self within, you close your eyes. And when you close your eyes, what happens? Either there is a thought or an emotion, and if you even drop the thought and the emotion, nothing is left. And when nothing is left, what are you bound to? What are you observing? Then I am free. So be that. Thank you. इसीलिए कहते हैं ना, सफलता की गुरु किल्ली होती है, और गुरु किल्ली गुरु ही दे सकता है. So if that works for you, amazing. If it doesn't work, come back to me. I have other techniques to send the cat back home. पक्का. प्रणाम गुरुदेव. Pranam, pranam Janesh ji. Thank you Janesh ji. आभा जी, please unmute yourself. हमारे स्कूल के सबसे छोटी बच्ची आ गई, देखो. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम. बस ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो 9 डे के लिए, 9 डे मेडिटेशन के लिए. फिर गुरु जी, हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है, हम ब्रह्मास्मी फैमिली के, क्योंकि सबके क्वेश्चन से मेरी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है. वाह. और सबसे ज्यादा थैंक यू है. मतलब आभा जी, आप, मुझे लग रहा है कि आप बचपन में कॉपी करके पास करते रहे होंगे. हो सकता है गुरु जी. क्योंकि सबके थोड़े थोड़े आंसर लेके आप खुद पास हो गए होंगे. हाँ, हो सकता है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो रहा है उस चीज से, जो सबके क्वेश्चंस आते हैं. तो उनके अली भाई प्लीज मुझे गुरु जी दिखाइए. एक मिनट. तो हाँ, मुझे गुरु जी से देख के ही बात करनी है. तो गुरु जी वो ऐसे ही चल रहा है. और सबसे बड़ा एक बिग थैंक्स सुधा दीदी के लिए, जिन्होंने मुझे ये हम ब्रह्मास्मी ग्रुप ज्वाइन कराया. कहाँ गए सुधा दीदी आपके? हाँ, सुधा दीदी वही होंगे. सुधा दीदी को एक बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद. अच्छा, चलिए अब गुरु जी प्रश्न शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी हाल फिलहाल तो खत्म होने वाले हैं नहीं. बहुत बढ़िया. हम भी आपके वजह से हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और क्या. और अब तो मैंने आपको पकड़ के रख लिया है, इतनी आसानी से तो मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं. बहुत अच्छा है. हर कोई मुझे आके पकड़ा के चला जाता है, आप मुझे पकड़ के रखो, अच्छी बात है. हाँ, मैं तो पकड़ के रखूंगी. हाँ गुरु जी, अब प्रश्न शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको प्रणाम के साथ. एक तो मेरा वही प्रश्न है कि ध्यान 24 घंटे मैं
कौन से समय कर सकते हैं और किस समय में नहीं कर सकते, पहला क्वेश्चन ये है। ओके, सो व्हेन यू शुड डू मेडिटेशन, व्हेन यू शुड नॉट डू द मेडिटेशन, वर्जित समय क्या है वर्जित समय ध्यान क्या करने का। Yes. देखिए कई तरीके की प्रक्रियाएं होती है, जैसे अगर आप खाली सांसों के ऊपर ध्यान देते हो, इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड डूइंग दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट डजंट हैज एनी लिमिटेशन, एनी टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप मंत्र के साथ या किसी यंत्र के ऊपर आप ध्यान करते हो तो उसके कुछ समय नियम है, वर्जित हैं। सो व्हेन यू आर चैंटिंग ए मंत्र or doing a meditation on a particular kind of object or yantra, for that early morning, evening, and there are certain yantras, कुछ ऐसे यंत्र है जिसको रात में किया जाता है, but majorly the time frame that is like around 1:15 to 2:45 or so, ये टाइम पे नहीं किया जाता किसी भी तरीके का मंत्र और किसी तरीके का। हाँ, until and unless you are practicing अदर काइंड ऑफ साधना, जो कि काल रात साधना होती है, या तो ऐसी साधना, क्योंकि आप तो वैसा करते नहीं हो। सो फॉर यू द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन ड्यूरिंग 1:15 टू 2:45। 1:50 to 2:45 नाइट का। अच्छा। और वैसे भी दोपहर में भी अगर मंत्र भी करते हैं तो वो क्या होता है, वो समय होता है मध्यकाल का। हाँ, सो वो मध्यकाल में भी नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली जो संध्या दी जाती है वो 3 संध्याएं की जाती है, त्रिसंध्या की जाती है। जो हाउस होल्डर्स हैं दे कैन डू 3 टाइम्स ऑल्सो। इवन एक होता है इन द ब्रह्म मुहूर्त में एक बार होता है, जिसमें आप आरती भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो। देन आता है इन द आफ्टरनून, द नून टाइम मीन्स 12 साढ़े 12 के अंदर। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डू, एंड यू कैन डू इवन द आरती ऑफ गॉड, एंड देन इट कम्स इन टू द गोधूल संध्या, दैट इज द इवनिंग पार्ट। सो आप त्रिसंध्या कर सकते हो। सो इन दीज 3 टाइम्स इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम। एंड एज आई सेड, अगर किसी पर्टिकुलर देवी देवता का मंत्र है, उनके हिसाब से समय का स्थिरता की जाती है, विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ, तो उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप उनकी जो मेडिटेशन है वो आप कर सकते हो। एंड इफ इट इज ओनली फॉर ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड फोकस ऑन ब्रेथ, देन यू कैन डू इट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, हाँ जी, कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है, ओके, और विष्णु सहस्त्र नाम चलते चलते बीच में कुछ ऐसा हुआ कि भले ही वो 2-4 सेकंड के लिए हुआ कि मुझे जैसे नींद आ गई हो या कोई विजन आया एकदम, ओके, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या था, और उसके बाद आंख खोलते ही वो एकदम गायब, और याद भी नहीं है कि क्या था वो, ये क्या है? ओके, कुछ होता तो याद रहता, कुछ नहीं था इसलिए याद नहीं रहा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, सी, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम जाप कर रहे हो, राइट? हाँ, नहीं, मैं सुन रही थी जैसे उनको। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब जब सुन भी रहे हो या उसका जाप भी कर रहे हो, whenever you are doing that, in that middle, because of the music and because of those things, you might just go into sleep also. Okay, अच्छा, but that is still good, because whatever you are putting as a input, जो आप input के जैसा mind को दे रहे हो, it will create that kind of output within you. So still it is good. If you are even not able to remember what happened, that's also fine, no issues. Let us even not worry about that. अच्छा, ठीक Okay, है। लेकिन मुझे एक चीज पता है आभाज, अगर वो आपको कुछ बताना चाहता है तो वो आपको याद रहेगा या फिर आएगा, ऐसा भी हो सकता है ना, फिर आए। Absolutely, why not? चलिए, ठीक है, थैंक यू गुरुजी। इसके लिए भी अब गुरुजी एक क्वेश्चन और है बस। हाँ, पूछ लो, और वैसे भी हाथ नहीं उठे अभी तक, आप पूछ लो। अच्छा, चलिए, ठीक है गुरुजी। एक थोड़ा सा एक थॉट जा रहा था दिमाग में, और काफी दिनों तक मतलब मैं कुछ पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद ये चर्चा मतलब मनन चल रहा था, जो भी था, तो उसमें ये था कि परमात्मा का आत्मा के साथ अटूट संबंध होता है। ओके, और इस अनंत गति को अनवरत जारी रखने के लिए वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है उसको? देखो, हम we all know, even science, even if you go into quantum physics or even to metaphysics, even normal science also, क्या कहा जाता है? ऊर्जा
कभी खत्म नहीं होती. You cannot create or destroy energy. It can only change its shape and form. तो ऊर्जा ना कभी खत्म होगा ना कभी बनाया जा सकता है, लेकिन वो अपना रूप बदल सकता है. जैसे इफ आई नीड हीट एनर्जी, मुझे ताप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आई विल लाइट अप ए फायर, राइट? तो मैंने क्या किया? I lighted up the fire, the wood converted itself. The wood के अंदर जो एनर्जी था वो बदल गया किसमें? आग में. वो आग से मुझे क्या मिला? वो ताप मिला. So can you see that burning of fire gives me? So can you see energy वही था, वो लकड़ी में था. It converted into fire. It converted into heat energy. So now what happened? तो ऊर्जा क्या हुआ? फिर दूसरे तरीके में बदल जाता है. I will tell you a beautiful way of looking at it, how to understand the entire birth and death cycle. This Sunday I will not be there, so most probably we'll have it on Saturday morning. So I want everybody to come up with a balloon, at least 2 balloons, so that you can even teach your kids, your great grandkids, Shiva Guruji, how life can be understood by a balloon itself. And it will be so clear to all of you that you will be stunned, like how is it possible to even, because the entire cycle of birth and death I will make you understand through only 2-3 balloons only. Nothing more is required. So everybody become a little kid and get 2-3 balloons. Okay? So you'll enjoy that also. Why not? तो आभा जी, ऊर्जा कभी क्षय नहीं हो सकती. तो ये ऊर्जा है क्या? ऊर्जा कैसी होती है? और जैसे आप मंत्र का भी जाप करते हो, तो कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मंत्र जाप करने से क्या होता है, राइट? तो ये सारे चीजों का एक उत्तर होता है. मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं. लेट मी गिव यू इन अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट. लेट्स टेक द वर्ड. शब्द को लेते हैं. शब्द के भी 2 भाग हैं. क्या क्या है? 2 भाग. वन इज द वाइब्रेशन दैट इट क्रिएट्स. एक है उसका रूप, या तो जो वाइब्रेशन करता है. दूसरा होता है उसका स्वरूप, मींस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. वर्ड के 2 चीजें हो गए. वन, द वर्ड इटसेल्फ, द वाइब्रेशन दैट इट क्रिएट्स, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो ये दोनों में भी देख रहे हो, ऊर्जा एक ही में छिपी हुई है. इट्स ऑलरेडी हिडन इन दैट वन थिंग. सो जिस तरीके से जब ये पूरे रचना की गई, ये पूरे ब्रह्मांड की जब रचना की गई, द एंटायर कॉस्मोस वाज ब्रॉट इनटू क्रिएशन. इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ द शक्ति. यहां पे जो शब्द है, शब्द का जो पहला भाग होता है उसे शक्ति कहा जाता है. मींस द फॉर्म, द वन दैट गिव्स द फॉर्म इज द शक्ति, राइट? दैट मींस इट इज द एनर्जी, एंड द मीनिंग ऑफ दैट इज शिवा. उसका जो अर्थ बनता है वो शिव है. तो उसी प्रकार से जब ये संसार की संरक्षणा की गई, द मोमेंट द क्रिएशन वाज हैपनिंग, दैट इटसेल्फ वाज एनर्जी. बट दैट एनर्जी टुक ए शेप, मतलब एक मायने ले लिया, एक स्वरूप ले लेता है. इट टेक्स अ मीनिंग टू दैट, एंड व्हेन द मीनिंग अपीयर्स, देन शिवा अपीयर्स. तो इसलिए, क्योंकि वो जो आदि युग से जो कहा जाता है, जो what would be the word, अनवरत गति चल रही है. हाँ, तो वो continuously, the same energy is continuously flowing again and again and again into different forms and shapes. जैसे, for the most lastly, let me make you understand this. Let's see, you have water in your hand in a bowl. ठीक है? ठीक है. And then you put it on the gas stove. क्या होता है? 100 डिग्रीज हुआ, पानी बॉयल होता है. It changed its form. Then you kept it on the stove continuously, and it evaporated. It became steam and then evaporated into ether, right? And then it went into ether. When I thought that water is no more in that bowl, is that the truth? मैं अगर कहूं कि मेरे बाउल में जो पानी था, वो बाउल का पानी खत्म हो गया, is it the right thing to say? दिखने में नहीं है. In seeing, it is no more there in that bowl, but it has evaporated and again gone into the ether. What will happen? Again it will become a cloud, condense, and again rain down. And if you are holding the bowl in the rain, and you will catch the water or not?
बढ़ जाएगा। हाँ, देखा पानी का पूरा साइकिल जो हम बचपन में सिखाते हैं साइंस में, वाटर साइकिल, हाँ, exactly the same एवोपरेशन thing. वगैरह। हाँ, So energy is the same energy. You are the same energy, the primordial force. इसीलिए मैं कहता हूं आपका भी आदि है ना अनंत है, क्योंकि आप जो श्वास ले रहे हो ये भी वही आदि शक्ति की श्वास है। आप जो हो वो स्वयं आदि शक्ति है। बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। गुरुजी वैसे तो मेरा आज के लिए मैंने इतना ही सुना था, लेकिन आपने कहा आपके पास वक्त है तो मैं थोड़ा सा और चर्चा करूँ आगे। बिल्कुल। गुरुजी मैं बचपन में मुझे एक प्रार्थना सिखाई गई थी, ओके। जो अनवरत मैं अभी तक करती हूँ उसको, वो आदत में पड़ा हुआ था। बिस्तर पर सबसे पहले उठ के बैठ के पहले वो प्रार्थना बोली जाती है, उसके बाद पैर जमीन पर आएगा। वो ऐसी हैबिट पड़ी हुई है। ओके। अब जब से मैंने ये सीखा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुद ब्रह्म हूँ, तो मैं उस प्रार्थना में कैसे फेरबदल करूँ? और अगर आप बहुत कहें सुंदर। तो मैं आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल सुनाइए ना, हमें क्यों, सबको सुनाइए। चलिए गुरुजी ठीक है, मैं सुना देती हूँ। जो मुझे मेरे पापा ने बचपन में सिखाई थी कि यही प्रार्थना बोल के आप बिस्तर से उठेंगे। हम तो आपके पिताजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको वो सिखाया, और आज तक आपने जिस साधना की, जिस चीज को आपके मुख से वो हमारे तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल। अरे गो अहेड आभा जी। गुरुजी अरे गुरुजी थैंक यू। हाँ सुनिए। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगती हूँ अब जग के काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होती हूँ तात। वाह अंतर में स्थित रहकर प्रभु बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सशंकित होबे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलगुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। वाह 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 वाह, दैट्स सच अमेजिंग। आभा जी इसको थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। श्योर गुरु जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल आउट देयर। ऑडियो बना के and भेज दूंगी। and we will give a task somebody to translate it. ठीक है गुरु जी, मैं भेज दूंगी। ओके धन्यवाद आभा जी, तो आपके मैं ये इतने इतने सालों की तपस्या को आपने हमारे सामने रख दिया आज। गुरु जी इसमें कुछ फेरबदल करना है, एज इट इज चलने दें। क्यों बदल। अब मैं खुद ब्रह्म हूँ तो मैं अपने आप को बोलूँ ये प्रार्थना क्या? देखो जब कृष्ण आता है, कृष्ण से माया थोड़ी ही ना अलग है, लेकिन कृष्ण फिर भी माया करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आभा जी एक चीज बताना चाहता हूं आपको। जी अग्नि से अगर आप ताप निकाल दो, इफ आई रिमूव द हीट फ्रॉम द फायर, विल इट बी हीट एनी मोर? नो ना। और आप ही ब्रह्म हो और अब मैं आपसे लीला ही निकाल दूं तो आप, संसार आपके लिए नहीं रहेगा। इट विल बी लाइक नो वे, द वर्ल्ड विल नॉट बी देयर। इसलिए जब तक संसार में हो ना, ये सब करते रहो, ये लीलाएं हैं। अच्छा गुरु जी, हाउ, देखो आप अपने आप को सजाते हो नहीं सजाते हो? बिल्कुल। क्यों फिर? आप कहते हो मैं तो ऑलरेडी सुंदर हूं, मैं क्यों अपने आप को सजाऊं? कभी पूछा है आपने? तो आप ब्रह्म हो गए तो अपने बारे में गाने से क्या प्रॉब्लम है आपको? इट्स लाइक पुटिंग ए मेकअप ऑन द ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, गो अहेड। बिल्कुल सही है गुरु जी। और ये मुझे लगता है कि प्रार्थना के साथ मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मुझको ऐसा फील होता है, जो शायद भी है। शायद शायद उनको किसी ने बताया होगा कि देयर इज ए वे टू बी इमॉर्टल। व्हाट इज द वे? गिव ए प्रार्थना टू योर किड्स एंड व्हेनेवर दे सिंग इट यू विल ऑलवेज बी देयर। सही है गुरु। अब और मुझे जानते हो आभा जी, जी उनको आपके पास किसने रखा है? आपने। है, मैंने भी चाहे इस रूप में रखा हो, चाहे अपने विचारों में, चाहे जो कुछ भी है रखा है, मैंने ही रखा है। और बड़े फिर भले शांति ही से रखा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो और क्या और चाहिए? मुझे पता है वो मुक्त हैं, मैं भी सोचती हूँ कि हाँ चलो वो मुक्त हैं, उनको जाने दें, कुछ नहीं। बट इसी रूप में सही कि मुझे ये तो याद है कि मेरे पापा ने सिखाया था मुझे, बस इतना तो आता है कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया था
बचपन में बहुत कभी समझ भी नहीं थी गुरुजी, और इसका सेंस भी नहीं पता था, बट वो रट के बोलना था तो बोल देते थे। बट अब जब उम्र बढ़ी है और समझ आई है तो पता चलता है कि इसका सेंस क्या है। क्या आपने ये किसी को सिखाया है? गुरुजी सिखाया तो नहीं है, झूठ क्या बोले, क्योंकि मेरे बच्चे सुनते ही नहीं। नहीं, इसीलिए कोशिश आपके पापा ने आपको जब याद भी नहीं है तब सिखाया था। हाँ, तब सिखाया था। बिल्कुल So you तभी didn't knew सिखाया the था। meaning of it, but at that time he gave you that, वो संस्कार दिए गए आपको, and still you look at yourself. ये ग्रुप में कभी भी like everyone, if they look at you, they feel so nice. Yes or no? You have a very different kind of aura of your own, and I have like many people in the room, those who read aura. So मुझे लगता नहीं है कि मुझे बोलना भी जरूरी पड़ेगा. Even if you don't know what aura is, कोई भी आपके साथ बैठे तो मुझे लगता है उसको थोड़ा ध्यान तो लग ही जाना चाहिए, प्रेम तो हो ही जाना चाहिए भगवान के साथ. प्रेम तो हाँ, दैट्स व्हाट. ऐसी रेवती जी लिख रहे, सी सो इनोसेंट, दैट्स व्हाट. इसीलिए हमने उनको उपाधि दे रखी है, ग्रुप के सबसे छोटी बच्ची. बिल्कुल गुरुजी। और मुझे गुरुजी कोई हेजिटेशन नहीं होती, मेरा कितना छोटा सा भी क्वेश्चन हो, बेहिचक। क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे जिनसे मैंने नाम दान लिया था, उन्होंने कहा है गुरु और शिष्य के बीच में कुछ नहीं बटा होता बेटा, बेहिचक आप कुछ भी पूछ सकते हो, और कभी भी किसी भी क्षण अगर आपको इसमें प्रोग्रेस करनी है और आपका उद्देश्य जिज्ञासा शांत करने का है तो। बिल्कुल. मुझे बहुत अच्छा लगा और आभा मुझे जी, बेहिचक। हाँ जी, एक सेंटेंस है, you become a fool for a moment and ask rather than to stay a fool forever. हाँ गुरुजी ठीक है। ठीक है ना, तो पूछ लो. मुझे मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि बस ठीक है, मुझे तो पूछना है, मुझे नहीं पता इसके बाद आप मेरे लिए क्या सोचें, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इस वक्त में अपना सब कुछ प्रेषित करना है आपको, बस एक बस मेरा समर्पण धन्यवाद. भाव है। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही रहो और ऐसे ही पूछते रहो. ऐसे ही रहूंगी गुरुजी हमेशा। वेरी गुड. थैंक यू बिल्कुल फॉर बिल्कुल, बीइंग दैट. थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहें, बस हमें मतलब हमेशा अपने साथ ऐसे ही बांधे रखें, ताकि हमारा और भी जो रास्ता है आराम से सहज और सुलभ हो जाए, सुगम हो जाए, आराम से चल सकें जिसमें। चलिए, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आभा जी. और जाके देख लीजिए आपके बारे में कितने लोग कितने मैसेजेस दिए हैं, अभी पढ़ लो जाके. ओके, थैंक यू गुरुजी, ये धन्यवाद. सबका प्यार है मेरे प्रति, बस मतलब ये क्या सब करें, लोगों आपको देखते ही हो जाता है. हाँ मेरे प्रति सबका प्यार है, बस मुझे अच्छा लगता है, बस सब मुझे इतना प्यार करते हैं, चलो, बहुत काफी है मेरे बढ़िया. लिए, काफी है। ठीक है, बहुत हाँ हरि भाई बहुत. जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या मैं बोल दूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आभा जी। हरि भाई, एक 49 क्वेश्चन आंसर सेशन का 49 नंबर का लिंक मुझे चाहिए प्लीज। अच्छा मुझे नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं निकला, तो वो अगर आप भेज सकें तो बहुत बहुत ठीक थैंक यू है, आपको। ठीक है, ठीक है। तो ठीक सीरीज है में हरि चल रहे भाई हैं आभा जी. जी, मुझे 49 नंबर चाहिए जी गुरु जी। मैं बोल रहा हूँ कि आप सीरीज में चल रहे हो. हाँ वो शायद जो भी है जितना मिल जाए अच्छा है, और चलो, वह गुड. उस चाहिए। ठीक है, थैंक यू ठीक गुरु है जी, आभा जी, और ठीक है आभा थैंक जी, यू थैंक हरि यू, भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आभा जी। थैंक यू ऑल फैमिली मेंबर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधा दीदी। सुधा दीदी सुनिए, आपको बहुत सारा थैंक यू मिल रहा है आज. हाँ जी हाँ जी, अच्छा जनेशा ठीक है जी, गुरु जी, फिर से ओके ओके। जनेशा जी आपने फिर से हैंड रेज किया है? आप वापस आ गए? अच्छा, हाँ धवल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जनेश जी, हेलो। 1 मिनट के लिए पहले धवल जी को उठा ले. हाँ, नहीं तो अगर आपको अगर जोर से लगी है तो पहले आपका. नहीं 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 नहीं, धवल जी पहले। चलो, Pranam. प्रणाम. Uh, so I was not planned, but just it popped up as the session began. So first one, recently, before a week or two back, I got a dream where I realized that one of my friend's uncle who is suffering from some disease is no more available, and he left his body. So I immediately told him that please help me to talk to him once. And then he said, I'm out of city. Give me a day or two. As soon as I'll go there, I'll manage to talk.
to him. And then he did it. And then I think day before yesterday, I got the news that he is no more in this world. So, and this is same thing happened when my mother was in the hospital. And the night when she died, before few hours, I was sleeping, but I awake, and then somehow I realized that she is calling me, and then I could get in, though she was in a coma. But so why this kind of things is happening? Is it happening only for related to death of people, or is it also happening for some good things also? Especially for two people are doing some things which is not correct. So I get some intuition that things are not good for them. So far, I think it is happening for warning sort of things only. Okay. Not for the positive side of it. Okay. Immediately, this is what soon enough, Mm. Dhavalji, if this is happening to you regularly, then the other side of it will also unfold. It doesn't work only one side. Okay. It might be because of certain space that you enter in a certain time, what you call a zone, right? So if you go into the zone, and I call it a zone because everybody's talking about that too much. The player is in the zone, the artist is in the zone. Similarly, as you are, there is a time frame where it just rolls down like everything. Past, present, and future are looking at the same on the same screen. But here you are in a very different realm. But if you jump this timeline of this world and you just connect to that space, there you see both past, present, and future. Here, what is happening to you is just like this. Throughout the day, if you are going through a road and you see a million things, how many things do you remember? Only the things, those are very unique or very, very odd. Yes or no? So the odd things that you see captures very easily. Let's say you are going and a human was dressed like a chicken and running on the street. Maybe wherever my focus is, I remember. Not only focus, you see the attention goes to very awkward things because your mind is always trying to learn. And what it is doing in its searching, it is searching for all the things that it has never seen, so that it takes a record of that. And that's what it becomes, a fresh kind of memory. Yeah. Right. So something that is odd. Similarly, when we jump into that time space without our knowledge, without our knowing, if we are jumping into that space, all that we are able to see is all the things that are really going to happen in a very tragic way. Are you getting that? So it is getting attracted to that, but it doesn't mean that if you do one thing from this day, Dhavalji, you might, or for sure, increase your intuition drastically. You know what you have to do? From this day moment, as you asked me, remember this. There is a space, there is a moment when you are seeing that this is happening, right? That very moment, be so conscious and look at around all the other things that is happening around it. And then you will be amazed how you can actually write day by day, minute by minute, what is going to happen. You mean I need to dig deep, or you just need to be conscious, because when I'm saying that, it will happen to you because you don't know how to be conscious. All this time you are just seeing as if it is a dream out there, right? But how many of you in the group right now, at least now when you are sleeping and dreaming, at least for a few times you now realize that, Arey, I'm dreaming this. How many of you are going through that? At least now you are conscious that you are dreaming. How did you become conscious that you are dreaming? You are not sitting and seeing it, because you are introduced into such spaces. In that space, you will remember what I said. And when you remember that, you become conscious about it. And when you become conscious about it, you not only see that one thing that is taking your attention,
But in that moment, you will stop for a moment and watch everything that is happening around you. Yeah, Vijayji, it will happen that way. Because in that moment, you just become aware of it. You might be seeing the dream for quite some time and suddenly you say, oh, all this is dream. But still, the dream continues. Yes or no? So similarly, Dhavalji, if you really want to increase this intuition power of yours, जिसे sixth sense कहते हो, जिसे pineal gland activation कहते हो, that can be done through that. Because you are already tapping into that zone again and again. And if you're tapping into that zone, it would be much easier for you if you just become aware and look at all the things that is happening. You can come down and you can write it down what is going to happen next. But not a very good thing. But it's not my efforts, it's just happening. No, it will not happen. It will never happen with effort, Dhavalji. You see, when you breathe effort with effort, then you have a problem. But when the breath is happening effortlessly, then everything is good. So when you're trying to jump into that space, then there's something is problem is there. But then you are just allowing yourself to go there. And then it becomes so easy. And if you practice that constantly, but let me tell you, Dhavalji, it is not a very good space to know everything. Because when you know and you still cannot say, you cannot do, that drives you crazy. It takes a hell lot of self-control to stop yourself from saying those to others. Because if I tell that, either I have to change the cycle of life itself, and that creation process has to be broken. And in order to gain that same momentum back, it will take a lot of time. And now you see, you know this is going to happen, but you cannot say. Then what? Will you not go crazy? And that's where many people go that way. They have the power. They gain that knowledge. They put their hand on somebody. They know what is going to happen to them. They see somebody. They know what is going to happen to them. But they cannot say. And when they are not able to express, they depress. And when they depress, they themselves go into depression. And then what happens? They go crazy. So Dhavalji, if it is happening, it's happening. But if you really want to go deep into that, I can help you with that. There are so many processes to actually unwrap that part. I don't want to go deep. Just wanted to ask that how to deal with it. And if it is good, it's okay. Or else. See, if you really want to deal with it, instead of telling like what is going to happen, if you realize that this thing is going to happen, right? Give them something good that will be helpful for them for the transformation of the transition from this world to that world. Might be just tell him, I don't know why, but I feel like if you keep on chanting the mantra of Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, give that mantra. What happens? If he chants, repeats that also, who knows, because you gave that moment in that time and he's chanting, and even in his last moment, he remembers that, still he finds his way back home. Yeah, that can be. So can you see the same thing that you cannot say, but you cannot give, you can give something, a way out as a good thing to them that might help them. Effort from your side. Yes. That way we have informed them as well. And at the same time, then in the same time, you become the mouth of God at that time, because you are giving them some good knowledge that might just relieve them from this cycle. So give something good. Sure. Second, quickly, Prabhuji, is why Kailash nobody can reach, go or climb? I heard only one person has been able to reach there. Many tries, but they just either die or maybe come back through some intuition. And I heard that if you go there, your nails grow faster, then you hear sounds, then you hear the noise of Damru, then Om chanting is going on. वो संध्या जी बता सकते हैं, वो 2 बार जाके आ चुके, so she can tell better. Okay. So let me tell you, there are certain things in this world that is not being understandable by the
scientific ways of looking at it, right? So when it is said like you cannot climb the mountain, what does that mean? That means which mountain are you talking about? The physical mountain or the Kailash that is in true self? The day you climb the Kailash within yourself, you will transcend that Kailash also. Without transcending within, without becoming that Shiva within, you cannot climb that Kailash, and they are trying to do that. Oh, I say the day you realize that Shiva within you, you just go and stand in front of the Kailash, and if you don't see yourself on the top of Kailash, then question me. कौन कहता है कि कैलाश के ऊपर जाया नहीं जा सकता? इंसान नहीं चढ़ सकता. I heard once you said that physical body cannot see Shiva. That's why he stays back side of us. And if we see, we need to leave the body. That's the most dangerous thing. That's why people pull my hand every time to put on their head. I deny. उनको समझ भी नहीं आता है. And then I have to pull out everything like, okay, physical hand, okay, take it. Okay. Right? So and because many of us, we know we are sitting here and we have climbed Kailash many times. While you meditate, where do you go? Where are you standing in that moment? Didn't you realize that they say people have not reached, but you have going there. You close your eyes right now and see you are sitting there. Right. Now, when I said that, what is happening? I said you are sitting there. Where are you? क्यों इतना शांत क्यों हो गया फिर सब कुछ अपने अंदर? Why did it become blank within you? मैं मंत्र कहा कोई? I just said, you see, you are sitting there. And for a moment, everyone just keep silent and just think that what I said. You are sitting there. Close your eyes and see. Don't visualize. Just feel what is happening within you. You need meditative practices. ऐसे ही शून्य हो जाओगे. Here and now. Prabhuji, third one. Last time Abhaji has asked one question on ego. I mentioned you over the chat as well. And the way you answered, I literally cried on that day, I think few days back. The way it was answered, amazing. So my question is that since a year or so, and there are many people who are there in touch with you, probably before that as well. So as per the normal retention of our mind, we forget things beyond 72 hours. So there are few incidents or experience, as you say, if you wanted to retain it, some of these positive nuggets, as I say. So what do you suggest to retain this? Because the way you are serving us since more than a year now, there are a lot of things coming at a very fast pace, out of which how to retain those good parts which we can recall, retain, retrieve, and maybe not only for us, but for the future generation of, or maybe Very somebody good. who's in need of it. On a lighter note, subscribe to Aham Brahmasmi channel. On a lighter note, but on a real note, leave those words. You will never forget it. If you go and start living by those words, how can you forget? You remember, your life will become the message for others. You need not say the way you are, it should become your message. And how do you become that? By
whatever I learned today, let me apply that into my life. And it became a normal for me. And then you don't have to. Why do you want to even use your memory? Why do you want to cling to something? I say even don't cling to those things. Just take it, absorb it, make it a part of your body. Let it go. So that you are open for new things. You are open to create new horizons, travel new dimensions. That's what you should do. Why cling? But yes, whatever, it's just like this. If you are eating an ice cream, taste it to the fullest. Similarly, whenever I'm giving an answer, absorb it so within that you cannot forget it. It's just like becoming that. Okay. Okay. And the last one. So how to deal with anyone with whom we met once or plethora of times? Because I realized that somebody we met and then they disappear and they never meets again to us. So and somebody with whom we are meeting repeatedly. So this soul who is coming in our life for once or many a times. So how to be the best with them, because we never know when we back again in that in front of that soul. So Wow. So do all the things to others that you want others to do to you. मुश्किल है. Do all the things to others that you want others to do to you. And if you start doing the same thing, what will happen? आपको जैसे जैसे आप चाहते हो कि लोग मुझे चाहें, आप चाहते हो कि लोग मुझसे प्रेम करें, आप चाहते हो कि लोग मेरे से बात करें, आप चाहते हो कि लोग आपसे बात सुने, आप चाहते हो कि लोग मेरे से कुछ सीख के जाए. Give the same opportunity to others. वही सब दे दो जो आप चाहते हो ना, वही सब दे दो, आप कभी मिस नहीं करोगे. सबसे सरल उपाय. Anyone who doesn't want to be loved, that means everybody wants to be loved. Anyone who wants not to be praised, everybody wants to be praised. But praising should be a genuine one. ये नहीं कि वाह आप तो तोप हो. No, that doesn't work. So just whatever you want to experience, give the same experience to others. Dhavalji, you will be such a lovable being on this planet. People will see you as God. और इससे सरल नहीं हो सकता शायद, मुझे लगता है. तो जो भी आप एक बार मिलो, चाहे 4 बार मिलो, but the way you meet them, make sure you remember. I always speak of my grandfather, one thing that he has said, like, Manas, whomever you meet, person, place or thing, make sure the moment you met them and by the time you leave them, they are a little bit better. But many times we leave many people bitter, not better. So what we have to do, we have to leave them better. leave So that whether it is a human being or your life, the moment you came into this planet, and by the time you leave this planet, make this planet a little bit better. A human you met, and when you met them, what you have to do, you just give them something good. See, there is always something good to be a so amazing discoverer that you don't see anything but goodness in everyone. But we search for faults. Stop doing that. Search for all the good things. I'm in a business where I meet a lot of new people every day and now and then and share things. So then if you start doing this, na Dhavalji, you will not search for people. People will start searching for you. Teach them that. See, anyone in this world, they all need all these things. We are not hungry for only food. We are hungry for that love and affection. Everyone. कोई है जो मना कर देगा? Even the rudest of the person. You know why he became rude?
because he didn't got that. Correct. Yeah. So you should be more sympathetic towards them because those people have not gotten it. जैसे भूखे को खाना खिलाते हो ना, जो हमेशा गुस्सा करता है ना, उसको ना सबसे ज्यादा प्यार देना चाहिए क्योंकि वो बहुत भूखा है. और अगर आपने उसकी भूख मिटा दी ना, वो सीधा हो जाएगा. इसीलिए मैं कहता हूं ना, जो भगवान को नहीं मानता ना, उसको बदलना सबसे आसान है. Right. तो आज के बाद जो भी मिले, जब भी मिले, जैसे भी मिले, उसको थोड़ा अच्छा बेहतर करके भेजना. एक मुस्कुराहट तो दे सकते हो, वो भी बेहतरीन है. दो शब्द अच्छे बोल सकते हो, वो भी अच्छी बात है. पानी का ग्लास दे सकते हो, बहुत बढ़िया. कुछ नहीं तो कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलना, भाई क्या बात है, आप में मिलके बड़ा मजा आया. Give, बेहतर हुआ ना. give something Yes. which they need. And that's what I was saying to मेरे बर्थडे पे उषा जी एक बढ़िया हार पहन के आए थे और मैंने उनको उस दिन कहा कि क्या सुंदर हार है. अब इनको पूछो, ये घर जाने के बाद फिर से मिरर में देखी होंगी कि नहीं देखी होगी. Sure. Yes, right. So Yeah. does it really take so much to make it a little bit things better? अरे किसी के याद में अच्छे कामों के लिए जाओ. What's wrong in that? और जानते हो ये करने से क्या होगा? देखो ये सुनो बड़े ध्यान से. अब जाके उषा जी को बोलूंगा, उषा जी मुझे ना हार बड़ा पसंद आया, इधर इधर इस तरफ. फिर उषा जी बोले चलो आज ले लो, आज एक दिन के लिए, एक दिन के लिए ही सही. You see, this is how you should be. मैं बटर मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं. मैं कहता हूं you should be so heartwarming that people find solace in your presence. आपका शब्द वैसा होना चाहिए, आपकी वाणी वैसी होनी चाहिए, आपका रीचेबिलिटी वैसी होनी चाहिए. भले ही लोग डरे आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन जब बात करें ना, अपने अंदर कुछ ना रख सके, सब निकल जाए. That's what I'm speaking about. You become an empty vessel in front of people and allow them to pour themselves. That's it. नहीं हम सब भरे हुए, हम ढूंढ रहे किसके ऊपर डाले. So Dhaval ji, by these words, when you are listening, you are so happy. Just think of if you do that to people. क्या होगा? Miracle. Do that. Be a miracle worker. अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है? Sure. Pranam. Thank you. Thank you, Dhaval ji. Very much. Thank you. Thank you very much. Sudha ji, please unmute yourself. प्रणाम सुधा जी. एक छोटी सी मेरी क्वेरी है कि अगर परमात्मा से आत्मा मिल जाती है, हाँ जी. तो उसका कोई अस्तित्व अलग से रहता है क्या? जब उसमें विलीन हो गई तो कोई उसका अस्तित्व तो रहा नहीं. और अगर उसका अस्तित्व नहीं रहा, जैसे सिद्ध पुरुष हैं, तो ये फिर बार बार पृथ्वी पे क्यों आते हैं परमात्मा से अलग? बहुत सुंदर, बहुत आसान है ये, आप जानते और अगर हैं. आते हैं, हाँ अगर आते हैं तो उनकी अपनी चॉइस है या उनको जबरदस्ती भेजा जाता है? ओके. इसके सुधा जी, the question here, so let me repeat it. If Atma and Paramatma, when the Atma goes and enters into the Paramatma and it becomes one, how the different identity, can there be identity that exists? And if that doesn't exist, then what are these great peoples, light beings, those who guide people? जो सिद्ध हैं, वो पुरुष जो हैं, वो कैसे गाइड करते हैं? यही है ना सवाल. और क्या ये is it their will that they're appearing in that way? Now इसका आंसर एक तरीके से बहुत सरल था, very very simple way. Look at this. समंदर के किनारे गए हो आप, you went to the sea beach and you take a drop of water from your bottle and put it into the ocean or the sea that you are sitting nearby. What happens to that drop? वो बूंद को क्या हुआ? एक बार अनम्यूट कीजिए. बूंद को क्या हुआ?
आप गुरुदेव एक बार रिपीट करिए जो आपने कहा। ओके, आप समंदर के पास बैठे हो, sitting near a sea, and you have a bottle in your hand, and Okay. you poured few drops of water into the sea. What happens to the drops? वो बूंदों को क्या हुआ? वो बोतल में बंद हो गई वो बोतल। नहीं नहीं नहीं, आपने बूंदों को डाला, आपने समंदर में डाला, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ उन बूंदों को? डाला तो वो भी समुद्र बन गई फिर तो। उसको वो समझ में आया आइडेंटिटी कैसे उसकी आत्मा तो कुछ परमात्मा बन गया? ओके, नाउ हाँ, लेट्स ठीक सी है। अनदर थिंग ऑफ इट। मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। आइडेंटिटी नहीं रही, बट एट द सेम टाइम डू यू सी वेव्स? Yes. Waves are Yes. ocean but have a different entity as a wave. समंदर तो है ही, जल तो है ही, लेकिन फिर भी उनकी एक स्थिति अलग है, उनकी एक ऊर्जा अलग है जो उछाल लेके आती है। दो तरीके का होगा यहां से। One, just like the drop, when it drops itself into the sea, it becomes the ocean or the sea, but the waves, despite being the sea, always climbs over it and jumps because of the force they have. So there are two ways when you get into or you become the ocean or you become the Paramatman. जब आत्मा विलीन होता है तो उसके साथ दो स्थितियां होती है। एक, one, those who are still there, they want to help the world, they become like the waves. So they have an entity, they have a force. सुधा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके, so समझ में आ रहा है? So they have a different entity because on the surface they are rolling, इसीलिए उनका एक स्तर होता है। They have a different realm where they dwell. जैसे अभी आज अप्पाराव जी लिख रहे थे संभाला, और जिसे गुरुस्थान कहते हो, या जिसे आप देर आर सो मेनी नेम, सिद्धाश्रम कहते हो, और यू कॉल इट एज so many names have been given to that place. That is a realm, right? In that realm, just like on the surface the ocean waves are jumping, they are there to guide the souls. On whose ideas? It's just like this. People just like you have retired, right, from a job, but at the same time, does it stop you to do anything else? अगर आप जैसे the last time you went to the blind school, why did you go to the blind school? आप रिटायर हो गए, आप चुप बैठना चाहिए था, but you didn't, because you thought that whatever I have should be given back. So they are there, certain souls are there, those who being with one with the divinity, they say let us also pave the path for others to find this way back to the home. दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए वो उस जैसे समंदर में उछाल आती है वेव की, वैसे there are certain the other things. How many siddhas are exactly doing it? And there are so many souls that are merged back into the Brahman. Then what happened to them? Just like the same ocean which has huge waves on the surface, if you go deep down within it, what is there? Absolute stillness. समझ में आया? तो उसी प्रकार अगर आप उसके साथ बिल्कुल डायरेक्टली उसके अंदर चले जाते हो, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोगों की भलाई कर सके, लोगों को कुछ दिखा सके, कुछ सिखा सके, you become like that wave. And you have noticed one magical thing that happens near the sea. Whatever you throw, they bring it back. अब जो भी फेंको वो वापस लेके आता है। क्यों लेके आता है? वो वही बताना चाहता है कि देख, यही होता है, तू अगर हमारे साथ जल बन के समा गया, तू मैं बन सकता है, लेकिन और कुछ पदार्थ के आलोचना करते हुए या संभावना के साथ अगर गया, हम तुझे वापस संसार में भेज देंगे। If you have become the water, you become the sea. If you have not become that, even if you throw yourself to that space, again you will be sent back. समझ में आया? इसीलिए मृत्यु तो होती है, परमात्मा से भी लोग मिलते हैं, लेकिन वहां रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें संपूर्णता से एक होने की प्रक्रिया जो है, उन्होंने उसकी प्राप्ति नहीं की, सद्गति नहीं मिली,
वापस आए। डिड आई आंसर? अच्छा गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि वो वहां तक नहीं पहुंचे कि वो वापस आए, वो मतलब पूरे उसमें अंदर तक नहीं गए, यही आपने बताया ना? ना ना ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, they have जो still carried a entity of not divinity, but the entity, the desire of the world that keeps them away from that. नहीं, लेकिन पूछ लीजिए। अपने अपने हिसाब से तो हर बंदा ये सोचता हमने अपनी डिजायर बिल्कुल सब खत्म कर दी, हमारे पास अब कोई इच्छा है नहीं। हम्म अपने हिसाब से तो ये सोचता है वो। देखो, जब तक लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो इसका मतलब फिर से चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू रीराइट दैट वो वेदर क्या स्टिल देयर इज समथिंग। बट मैं ये नहीं कहता हूं कि इच्छाओं को खत्म कर दो सुधा जी। मैं ये नहीं कहता हूं इच्छाओं को खत्म करो। यू सी, इफ यू हैव ए माइंड, इट्स डिजायर कंटिन्यूस, because you know why desire continues? Because mind itself is the creation of a desire of God. आपकी बुद्धि कैसे बनी? वो भगवान के इच्छा शक्ति से बनी है, तो इच्छा शक्ति कंटिन्यू करेगी। इट विल कीप ऑन आस्किंग फॉर समथिंग समथिंग समथिंग, बट if you detach yourself from that, then you are free. मैं मुक्त हो गया, इसका मतलब क्या मैं जाके आइसक्रीम नहीं खाऊं? नहीं, वो समझ गई, वो असंगों वाली स्थिति आनी चाहिए। आप आइसक्रीम भी खाओ, अलग बैठ के देखो क्या होगा। आप एक बात और बताइए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लास्ट में केवल ईश्वर ही आपको याद आए? है ना, क्यों नहीं है? कैसे? जो जीवन भर याद करोगे वो। जीवन भर याद करने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में उनको याद नहीं कर पाते। आपको कैसे पता चला? जो शब्द बोल रहे हो वो वैसे नहीं नहीं, होता है आप वो सुधा जी। उनकी भरत मुनि की जो वो आती है स्टोरी, वो तो अपना छोड़ के जंगल में भी चले गए थे कि नहीं अपन ये राजपाट चाहिए ही नहीं, तब भी वो मुक्त नहीं हो पाए वहां जाके भी। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ऐसे हम एक बंधन में बंधे ही दैट्स व्हाट आई एम हाँ, सेइंग सुधा जी। देखो, हाँ, इसी कारण देयर आर मेनी लोकस, राइट? लिबरेशन इज ए स्पेस दैट यू विल नॉट रिटर्न. It's a no return space, but you continue to do good things, then you go to different spaces. If you still do good things, then you find a way out of that. तो इस जिस मुनि का बात आप कर रहे हो, still there was a desire left. क्यों? देखो, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है ना, ठीक है, राज ऋषि बने, उसके बाद ब्रह्म ऋषि भी बने, हाँ, फिर उसके बाद भी भूल गए कि नहीं? भूल गए वो भी। क्यों भूल गए बताओ? उस क्यों का जवाब मुझे नहीं मालूम, Can लेकिन you भूल गए। see what you become with the powers that you get? हाँ, but you never realized who you are. आप शक्तियों के पीछे काम करें, आप अपने आप को नहीं समझे। सो यहाँ पे शक्तियों के पीछे मत काम करो, आप क्या हो जान लो, और आप क्या हो जान गए तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मुक्त हो। फिर मुक्ति क्या चाहिए आपको? अच्छा गुरुदेव, एक यहाँ तक तो समझ में आया, जितना समझ सकते थे उतना समझ आया। ओके, एक क्वेश्चन और है ना, जैसे आप हर बार ये कहते हैं हर पल को भरपूर जियो, उसके बाद उसको छोड़ दो, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं वृंदावन गई, बिहारी जी से मिली, अगर मैं बिहारी जी को वहीं छोड़ जाऊं तब तो मैं कभी ऊपर जा ही नहीं सकती। देखो सुधा जी, जिस समय को आप जी लेते हो, आप उसे छोड़ने का मतलब क्या होता है? यू लेफ्ट दैट मोमेंट, यू नेवर लेफ्ट हिम। मैं तो कहता हूं उस समय ऐसे जियो कि वो आपके पीछे भाग के आए। You see, you completely surrender in that moment to him, that this day on only you exist. और आप जानते हो आपको फिर क्यों बिहारी जी की याद आती है आने के बाद? क्योंकि आपने बिहारी जी को संपूर्ण रूप से अपना नहीं बनाया उस समय में।
मैंने एग्जाम्पल दिया था ना शादी का, वही एक ही बार होता है, और एक बार हो गया ना फिर हो गया, बस खत्म। तो वैसा तो वो कैसे लाया जाए? उनसे टफ काम पूछ लेना। लगता है। हाँ, देखो अब की बार जब जाओ, so this time when you go there, you just do one thing. You say, I have come here for the last time. What? I have come here for the last time because I'm not going to return. My body might. हो गया? हो गया। थैंक यू। Thank you, Mukta ji. Mukta ji, please unmute yourself. Pranam Guruji. Pranam Mukta ji, nice to see you after a time. And नहीं, thank you for the compliment. आपको बताना पड़ेगा दोबारा से। कोई मेरे बात मन नहीं। में मेरे मन में जो कॉम्प्लीमेंट चल रहा था वो तो नहीं आपने बाप लिया? नहीं नहीं नहीं, आप अभी पूछ लो। हाँ जी, आप अभी पूछ लो, you can ask. मुझे Let me unmute you again. Yeah, please unmute. but I'm not able to see you, Guruji. हरि भाई, ये माया हरि भाई की है, देखो आगे। या मुक्ता जी फिर से अनम्यूट करिए। हाँ, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं 4 लाइन आपके लिए कहना चाह रही हूँ। इट्स जस्ट इरशाद इरशाद इरशाद। आपके जन्मदिन पे हम सटल फॉर्म में थे वहां, आज आमने सामने है तो। और वो जो 4 लाइनें वो आप ऑलरेडी जानते हैं, सब जानते हैं, बट दोबारा से। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की, तुमको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुमको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर फूल इस संसार के, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्म ज्ञान की। तो वो सब तो है ही, लेकिन आप तो आत्मज्ञान देने आए हैं और हम बटोरने के लिए आए हैं। वाह वाह वाह। नहीं तो पेड़ भी किस काम का अगर बच्चे उसे पत्थर ना मारे, वो पेड़ किस काम का जिसमें फल ना लगे, वो पेड़ किस काम का जिसके फल खा के किसी की प्यास और भूख ना बुझे। बिल्कुल। और आप जैसे बटोरने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठ के। सो थैंक यू। As we were discussing on this call that to praise is a divine quality, तो आपके लिए तो शब्द ही नहीं है। Gratitude that when we come for this question answer session, पता नहीं कहाँ से we come up with some questions, वो introspection. So thank you for that, in gratitude for that. आज का मेरा प्रश्न is like some incident. I don't know if I'll be able to phrase it correctly. ये कोविड के टाइम में और उसके बाद बहुत डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, स्पेशली डेथ को लेके। ओके। एंड ऑफ लेट व्हेन वी हियर यंग पीपल डाइंग एंड ऑल दैट, मतलब एक कंपैशन तो होता था, लेकिन अब सैडनेस नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सैड हो जाती हूँ, then I'm questioning God or I am going against what He has done, which I am not supposed to be doing. तो वो कहीं होता है ना, हम authentication चाहते हैं आपसे। So is my thought correct? Is it the right way of thinking? फिर one part of me says, of course we are compassionate, but हाल ही में मैंने I was talking to somebody and I could not express myself. I just said that one line and I kept quiet.
किसी ने, वो यूएस में रहते हैं, उन्होंने फोन पे ऐसी बात हो रही थी, आई वाज हियरिंग टू पीपल टॉकिंग एंड आई जस्ट हैपेंड टू से इट वाज ऑन द डिवाइस ऑफ केके, तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं देयर इज नो नीड टू बी सैड, आई कुडंट एक्सप्रेस इट, बट तो ऐसे में हम कैसे किसी को समझाएं? ऑफ कोर्स मुझे कैसा लगता है जब मैं अब किसी का डिमाइस सुनती हूँ, तो एक लगता है कि बस उनके लिए एक प्रेयर और उनका आगे का जर्नी अच्छा हो, मतलब अच्छा ही होगा, मतलब उस तरीके से सोच आती है, ना कि सैडनेस वाली, सैडनेस या सॉरो नहीं है। सो डज दैट मीन कंपैशन नहीं है? कंपैशन तो है ना। तो उस दिन मैंने ऐसे कह दिया, उसके बाद आई वाज जस्ट साइलेंट, स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन दैट कि व्हाट इज इट। तो वो जो सामने वाले थे, वन रीजन बीइंग यूएस में, एंड सेकंड शी इज यंग इन एज, थर्ड उनके घर में भी 1 साल पहले कुछ ऐसा डिमांड, सो उनको एकदम से ऐसे लगा, नो 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 यू कांट से दैट वी कांट बी सैड ऑन समबडीज। तो मुझे एकदम वो लगा, हाँ ये तो बात सही है। मुझे, आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस कि हम दो लोग अगर किसी की सैडनेस के बारे में बात करें, इससे अच्छा अब अगर उनके लिए प्रेयर मेडिटेट करते हैं, ऐसा कुछ। तो प्लीज गाइड मी ऑन दिस, दैट वेयर एम आई गेटिंग स्टक। Okay. Again, a very easy way to find that out, to come out of this space. So have you seen a doctor who is a surgeon? Mm. Is he compassionate towards the patient or not? Yes. But still he cuts. Yes. Why? What has to be done? Right? So when you are looking at the doctor, why I'm giving an example of doctor, it is because it fits so well. Ekdam badhiya example. Correct. But when the doctor is speaking to the patient, does he says that when you go inside the operation theater, I will inject you with anesthesia, then I will bring a saw and a hammer and a chisel and then break that bone into pieces. I'll cut through your heart, then pierce it with injections, then a lot of blood will be coming out, then I will squeeze it out, then I will put a stent inside that, then you will have a lot of pain, but you will not know it because you are under anesthesia, and I will stitch it with stitches like these big needles will be used. Does the doctor say that? कोई पेशेंट उसके पास ऑपरेशन कराएगा? Any one of you will ever go to the doctor? So the same situation with us in this world. When you are walking on the path of spirituality and you start renunciating from all these things, automatically हो जाता है, वो वैराग्य आ ही जाता है. Because now you see, like what people see as death, I see it as an opportunity to meet God. Absolutely. Right? Yes. ये देखन हार डरत है मृत्यु को, ऐसा कुछ. There is a beautiful statement of Kabir ji. And he says, like, people are frightened to die and I'm waiting because कब मरण हो और कब उससे मिलन हो. So when you are going to the spiritual path, you cannot see a difference between, what is the difference? If somebody died, what happened? He went into the another realm. Might be he got found his way. So what I can do, let me pray for him. But just like the doctor, if you say them straightforward, you will create such a fear that they will never ever allow you to operate on them. So what do you have to do? You have to be compassionate just like the doctor, but cut down on the thing that has to be cut down. Cutting down means you should realize that they are still stuck in the Maya in which they are tied. But if I say how I am going to cut that, it's going to be painful for them. They will never stay with you. So what you have to do, you have to go through them, become compassionately, sit with them, talk to them the language that they understand. पहले उनको समझाओ. And then when they realize that part, they themselves will say, how did you become this? Can you teach us the same? Then tell them what all you did. But straightforward, they won't understand everything. You're absolutely right. So when you are sitting, you are talking to people, talk what the language they can understand. So tell them it is really a sad incident. But when the sad incidents happened, let us pray together for the solace of that soul.
And may the blessings of that soul be always on us. May he become the guiding force. As he has lived his life in such a beautiful way, may he continue to guide us despite not being in this physical realm. See, are you not compassionate in that? But at the same time, you are absolutely detached from that sorrow. That's your freedom. And at the same time, you are letting them understand it slowly, slowly, slowly. Because down the line, few days, they will question you. How were you able to handle yourself in that moment? Then if you tell them what, then they will understand it. गुरुजी कैसा होता है, मेरी ऐसी इंटरेक्शंस कई लोगों के साथ होती है, Okay. those who have actually lost their near and dear ones, and because I have gone through that, I somehow feel मैं बहुत conviction से और बहुत easily हो जाता है. I've been doing it for quite some time, and कभी-कभी वो थोड़ा ऐसा लगता है, of course situational कि आपने अपने बारे में सोचा ना what next and all that, कि भी आप उनको रो के याद करना चाहती हो कि meditate करके, so it does good to you and to them, वो सब ठीक है. दिक्कत अपने near family members से आती है उनको, and because I want to know from you कि so the next step I don't do this. ये तो हो गया कि जो बिल्कुल निकट किसी somebody has lost their dear one, but this was like two people talking about somebody, so I was thinking कि उनको बताया जाए, they were not like, so फिर मैं भी सोची थी sad तो शायद हम feel करते हैं maybe, and when you say somebody that you're not sad, that means we are giving impression that we are not compassionate. So it was like आप समझे बिल्कुल एक third scenario types. Now I was not talking to a immediate person who had lost. वो केके की बात कर रहे हैं जो singer है. अरे अच्छा नहीं. So I thought this conversation will go so different. Instead of saying all that, let us just pray for him and आगे बढ़े उस तरीके से. तो वहां पर भी I'm sure युक्ति ही चाहिए, और आप ही बताएंगे कैसी युक्ति यूज करें. बहुत सुंदर, बता देता हूँ. आपके बात से कि मैंने कुछ तो किया है जो सही नहीं है. So we were talking about death, so let me talk about a little bit funnier thing so that we come to that space. It was the marriage of my elder sister. Okay, बड़ी बहन की शादी थी, and I don't know whether in this part of the part of state that you live, whether this happens or not, but in our part there are old people. The ladies especially, when the girl is about to go, they start singing and crying even though they don't feel like crying. You know, in there is a term called as rudali. Right? Rudali का मतलब क्या है? The people, those who come and they cry. जैसे रुद्र है, ये रुदाली है. So they keep on, they sing a song and they keep on crying. They don't have a relation with that person anyways, but they keep on crying. So something similar happened in my house. And everybody, it is a custom that everybody should cry. And I laughed out loud. I laughed out so loud that one of the lady got offended. Of course they should. And it was intentional from my side. I wanted that she should feel that. Then when she asked, like, you don't love your sister, I say more than you. Then you are not crying. Yeah, I said, you will take some money. After that, you will not be seen. But throughout my life, I will be taking care of my sister anyways. I said, but why you are not crying? I said, I know the reality of life. That's why I'm not crying. He said, what is the reality of life? Today, she will also go crying. But after 4 days, when she returns, she will try to grasp all the things from this house and say, मुझे अपने घर लेके जाना है. I want to take this to my home. Hello. सच्चाई है कि नहीं है? The same house, she will go crying, but after 4 days, when she comes back, she will come to you, the papa and the father, and to me, can I take this to my home? Can I take this to my home? Can I take this to my home? तो फिर ये क्या है? मैं अपने घर लेके जाना चाहती हूँ. तो फिर ये किसका घर था? So I said, this is exactly for whom you are crying. She also will cry, but after 4 days, she will come and say, my house there.
So Muktaji, when we are talking about the death, right? Some people will never understand the beauty of it. Because you know why they will not understand the beauty of it? Because they want to deny the truth. They want to live in illusion. Because life is always temporary, death is the truth. It will happen. And we always try to postpone the truth. That's why we are also sad. And when it happens to someone, we are sad in that moment also. But what is the truth of life? Everybody dies. Every one of you will die. Don't think you are going to get out alive of this life. Every one of you will die, including this body. But it's not about what people are saying. I am more interested, Muktaji, when the person left its body, how did it leave? रोज रात सोने जाते हो ना, you go to sleep. Are you fearful when you go to sleep? No, भरोसा है सुबह जाग जाओगे. वैसे ही जब मृत्यु भी आएगी ना, तो भरोसा के साथ सो जाना. So you'll die in that way, that just like another sleep. All these days, Muktaji, मेरे लिए तो ऐसा है. All these days I was sleeping on a memory foam pillow. And when I die, I will sleep in the lap of the divine. गुरुजी, अभी ऐसा लगता है इधर भी वो है, उधर भी वो है. पहले तो था ठीक है, हमारी तैयारी है चलने का, अब है इधर भी वही है, उधर भी हुए, तो जब बुलाएंगे वहां चले जाएंगे. उन्होंने यहाँ भेजा है, कुछ काम के लिए भेजा होगा, करेंगे, जब हो जाएगा वो बुला लेंगे. Can I take you one step further, Mukta ji? Yes, yes. आप कहते हो कि उसने मुझे भेजा है. He has sent me here to do something. For example, प्रणीत को भिला खरीदने भेजा है, नीता जी को लिखने के लिए भेजा है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सब यहाँ के सबके साथ मुलाकात हुई, मेरा सोर्स तो उनके साथ ही है ना. But I want to break that also today. Will you allow? ऐसा ही इज द डायरेक्टर, उन्होंने कुछ मुझे कहा है जाके करने को, अब मुझे याद नहीं है उन्हें क्या कहा करने को. ओके, चलो उससे भी आगे. लेट्स टेक वन स्टेप अहेड. यस गुरुजी. आपने कहा कि उसने मुझे भेजा उसका काम करने के लिए. नहीं, मतलब कुछ तो करना होगा मुझे. Okay. Anything. So something you have to do. So he has sent you. I have to learn something or unlearn something. Whatever. So that's why he sent you, right? Everybody feels the same. कि आपको शायद कुछ करना था या कुछ एक्सपीरियंस करना था, कुछ सीखना था. That's why the God has sent you here, right? हाँ या ना? Yes or no? At least show me a thumb. At least I should understand like this or this. This. Okay. जब आपको लगता है ना कि उसने आपको भेजा था कुछ करने के लिए, मुझे लगता है मैं स्वयं आया हूं कुछ करने के लिए. हमें याद नहीं है ना गुरुजी, आपको याद है? You said he sent you. I say I have not sent. I have come. I have incarnated. देख रहे हो मुक्ता जी, अभी भी ब्रह्म का भ्रम है कि ब्रह्म अलग, मैं अलग. इसीलिए मैं कहता हूं कि उसने मुझे भेजा है. मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं स्वयं आया हूं अपनी रचना की संरचना करने के लिए, अपने रचना को अनुभव करने के लिए. Just like that kid, you remember, he takes a piece of paper, makes a boat out of it, puts it into the rainwater and runs behind it. I am that. मैं वही हूं. आप कौन हो? जब तक आप उसको अलग करते रहोगे, तब तक वो आपसे अलग रहेगा. क्यों? मेरे कहने से ही वो अलग होता है. In my saying, it becomes two. But in my being, we are all one. लेकिन लोगों के साथ जब बात करते हो, talk to them the way they understand. And especially the people, those who walk on the path of spirituality, let me make you aware of something that is very important for all of us. The way you understand the world, nobody else understands, especially the people outside. They won't understand.
So from this day on, deal with those people as if they are kids. क्या आपने देखा है, आप मुझे जब सवाल पूछते हो मैं कितने तरीके से समझाता हूं? क्यों? Because I treat you as a kid. So you treat all the other people as a kid because they will not understand. So you have to put extra effort to make them understand. You have to make it extra simple so that understand. You have to be so caring, lovable for them so that they understand. Because for us, once you have grown up, it doesn't matter. कुछ मीनिंग ही नहीं है सारे चीजों का, लेकिन क्योंकि पूरा संसार बच्चा है, आपको उसके बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा. You have to teach them just like that. गुरुजी एक और ममता जी का एक सवाल है, ममता जी का हाथ उठा के पूछ लेंगे उनसे. हम दोनों पहले बात करके फिर फटाफट से ये देखो लॉगिन. मैं यही कह रहा था ना हरि भाई, मैंने यही कहा कि मैं किसी को भेजता नहीं हूं, मैं स्वयं आता हूं. ये दोनों सिस्टर्स बात करके दोनों साथ में आके क्वेश्चन पूछ रहे. देखो गुरुजी मेरा एक और छोटा सा सवाल है. पूछ लो, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछ लो. वो भी यही कि आपका एक ऑथेंटिकेशन चाहिए कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि अभी ऐसा लगता है मृत्यु है, उसकी वजह नहीं है. हम अक्सर ऐसा होता है जी, नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, नेग्लिजेंस, कोविड आ गया, ये आ गया, मुझे अब ऐसा लगता है मृत्यु ने आनी थी, आ गई. सो इज इट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? हमें नेग्लिजेंस में नहीं पढ़ना चाहिए कि अरे उस मतलब हम वजह क्यों ढूंढते हैं? नहीं ढूंढना चाहिए. I'll tell you one thing. You know why God was created? कुछ तो वजह होनी चाहिए. Even God was created for that. Some reason should be there. So God was created. एक पुरानी हाँ जी बोलिए. नहीं, यहाँ पंजाब में ऐसे ही कहावत है, मैं अपनी मम्मा से सुनते थे कि भी भगवान कुछ भी अपनी सिर पे नहीं लेगा, इसलिए वजह बनती है मृत्यु की कि ऐसा हो गया. हम हमेशा we blame it on something, somebody. That's what it is said, no मुक्ता जी, कि भगवान अपने ऊपर कोई ये नहीं लेता. So some or other thing happened. अच्छा इसके वजह से, because of this happened. देखो एक ही चीज स्पिरिचुअलिटी में होता है आपके साथ. One thing that you come to a understanding, whatever happens in this world, you add a word called as because of this. I came into this world because of my parents. I am doing this because of you. My life is this way because I am here. I have this much money because of the job I do. I am in a terrible condition because of the people around me. Can you see? You always find a because. क्योंकि आपको लगता है कि इससे पहले कोई कारण होना जरूरी है. अकारण कुछ भी नहीं है, यही है ना. वैसे ही मृत्यु, अकारण मृत्यु भी नहीं हो सकती, इसीलिए उसको कारण दिया जाता है. लेकिन the day again it comes, I ask you the same thing. What is the reason for you for being you? Not the body, not the name, not the mind, not the designations, not the wealth. What is the reason behind you being you? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Can you see? You don't even need a reason for being you. For being anything in this world, you need a reason. But for being you, और जो कारण से परे है, वही ब्रह्म हो सकता है. It is. It doesn't need something to be. It is. जानते हो आप जापानीज लैंग्वेज में there is nothing called as he is, she is. It is always one word. It is. I say how a beautiful way they have expressed it. It just is. कोई कारण नहीं. वैसे ही मृत्यु का कारण तो बनाया जाता है, because in this world you need a because. Because your mind needs an answer, your mind needs a story, your mind needs something to convince itself. Just like if we don't give a name to any one of us, what will I call you? My mind will always be confused what to call you. Haven't you seen? I met one more on a lighter side, Mukta ji. There was a couple, those who were married for last 35-40 years. One of his friend returns and meets him. They are old now, and they was talking to them like, wow,
how still you are good enough. You are still married to the same lady and you still are happy, and you are calling her honey, honey, honey every time you call her. What a beautiful relationship you have. The fellow said, I will tell you the secret when I go outside. The reason is 20 years ago I forgot her name. That's why I call her honey. So similar is the case, Mukta ji. I call myself this name because I have forgotten all the names that I had. Why do you call your name? ये नाम भी यहाँ के लिए है ना, उधर जाएंगे तो कोई नाम नहीं। मुक्ता जी, उधर जाएंगे तो कोई भी नाम मेरा ही है। Any name is mine and every name is mine. But can you see, we are not talking about any specific thing about something of the Vedas or mantras or something. But in my speaking, what is happening? Can you see? लोग कहते हैं कि आप जब कहते हैं तो ऐसा क्यों होता है? I say, you speak words, I speak mantras. Why do you speak mantras? Because I am divine itself. So what's the difference between you and me? You are acting not to be. Now, what am I doing here? Wearing very beautiful dresses so that people come and say, wow, wow, you look great. But at least by looking at this greatness, you also try to jump into that zone. That's all that I try. So Mukta ji, ए हटा के आई लगा दीजिए आपके नाम पे। जिज्ञासा उठती है और फिर आप उसको एकदम परिपूर्ण करते, पूर्ण हो जाता है। आप वही दे सकते हैं जो आप हो। You can only give what you are. We are also blessed that we search for questions and we have that belief कि हमारे प्रश्न का हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। And you see, what are we referring? We are not referring anything. Still, all the answers are arriving on their own. इसीलिए मुक्ता जी मैं यही कहता हूँ ना, आपका लास्ट का जो MUKTA है ना, ए हटा दे के आई लगा दीजिए। वो भी आपको ही करना पड़ेगा। रीनेमिंग। चलो गुरुजी, मैं धन्यवाद भी नहीं बोलूंगी। किसको बोलोगे? जैसे अभी आभा जी पूछ रहे थे, मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके बारे में बोलूं, किसका मंत्र जाप करूं? मैं अभी धन्यवाद। Just like that. So, क्योंकि जो आपसे मिलता है वो धन्यवाद से बहुत परे है, तो धन्यवाद भी नहीं कहना है। Good, you are understanding that, or else just people keep on throwing that at me. नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। Be that. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब भी तेरा मेरा बाकी है। नहीं, फिर एक हो गया ना। फिर किसको कौन बोल रहा है? अपने आप को, अपने आप। ऐसे नहीं मुक्ता जी, मैं तो बस हूं और मैं ना मुझे किसी ने भेजा है ना ही कुछ करने आया हूँ। नहीं, आज वो एक कदम और आगे समझ में आ गया है। समझ वो जब आप कहते हैं तो फिर वो एकदम ड्रिल हो जाता है, ड्रिल हो गया। थैंक यू। मैं बाकी फैमिली मेंबर्स को फॉर अब मुक्ता जी फंसने वाले थे, मुझे थैंक यू बोलने वाले थे, फिर रोक लिया अपने आप को, बोला नहीं पूरे फैमिली को। अच्छा चलो, वेरी गुड। फैमिली को आप अलग समझते हो अपने से? नहीं, पहले ऐसे लगता था कि प्रश्न पूछे सबका टाइम, अब लगता है नहीं, शायद मेरा प्रश्न और भी किसी के दिमाग में चल रहा होगा, या क्योंकि और भी कोई जब प्रश्न पूछा जाता है और भी नहीं कहूंगी तो उससे हम भी कितना कुछ हमको समझ में आता है, तो इसलिए उससे भी आगे है कि हाँ, प्रश्न है, बस ना मेरा ना तेरा, प्रश्न है और
सबका है, सबका है। और उत्तर में सबको कुछ ना कुछ, हम सबको समझ में आया एट वॉट एवर लेवल वी वेर। अरे क्या बना दिया आपने हमें। बनाया क्या है, मैं तो आपको मैं बनाना चाहता हूँ। जिस Thank दिन you. बन जाओगे बस खत्म। अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू। Thank you, Mukta ji. Revati ji, please unmute. Thank you, Hari bhai. Thank you, Mukta ji. Revati ji, please unmute yourself. Pranam Guruji. प्रणाम रेवती जी। Okay, I have one small question later on, but I want to share something. After these 9 days of meditation, I just have to say this, and I wanted to share this with the family that it's been just 2 days. So work is as usual. So there's no change in the work. But the whole mindset of handling work for me has become so different that I think I have become supremely calm. And as you promised, I think Aliva ji was talking that day, and she was saying that when we need you, we will just call out. And you actually said that I will be there. And I think a couple of times today that happened with me. And I think I must have just closed my eyes and I must have said, Mahadev, you have to take me through this. And then a loud smile will appear. And I actually sailed through. It cannot be anything other than what we have done in this 9-day meditation. I just remain completely surrendered. And I think for the first time, I went in front of my temple and I said, I have surrendered. Do what you want with me. I am you, you are me, we are one. And that's it. Somebody in the family itself, in this family itself, had told me that spirituality will help go through the obstacles of worldly life. And I think that's what is happening with me. And I'm just very, very happy to be here. I had to share this. Thank you. So my question. देख रहे हो, अप्पा जी बिल्कुल सही बोल रहे। Can you see, like after sitting with me for 9 days, you start speaking like me. My tone, my face has changed. I've become so calm. So I actually feel very calm. I mean, the days are the same, the business is the same, work is the same, but obviously it's me who's changed, not the other people. Nothing changes, everything changes. Yeah, I'm just feeling very happy with myself. So, and I shall continue to be like that. Okay, so my question, very small, but why is it that when the meditation is going on and music comes into it, there's an अजीब तरह का कुछ हो जाता है, मतलब tears start rolling, you feel happy, you feel emotions. Why does that happen? Why does that happen with music? Okay. किसी ने मुझे बचपन में कहा था, somebody has given this answer to me in my childhood itself. They say, you like music when you are happy and you understand the meaning when you are sad. Yes or no? वही wordings थे. The wordings were same. You enjoyed that music. But when you are sad, you started relating to those words and you said, wow, it is so really. Have you noticed one thing, Revati ji? The same songs, the same movie songs, right? The same movie songs were so beautiful songs. The song like, इस तरह आप यूं हमको मिल जाएंगे. What happened to that song? It was still a song. But when you are hearing that, it is melting your heart in a very different way. Why? Because it's not that you are sad. You have grown to a level where you understand it. Every movie song becomes a prayer for you now. It feels like if a hero is singing a song to the heroine in the movie, it still feels like as if you are singing that song for the Lord, for the divine. Every song. And that's where it touches you, because music is not bound to words. Just like, see, yesterday I posted that
Oh, it's That beautiful. Bengali On. song, right? Awesome. And when you listen to that song, many of these people, those who are especially from this part of India, they don't even understand that language. But when they are listening to that, you ask Sumaji, she was putting her earplugs. First of all, she didn't understand. Then she asked me, I said, just listen to that. She put it and then went, gone into trance. It will happen to everyone. Why? Because music is not bound to meaning. Music is a very, very deep sense of emotion. So what happens is there are certain emotions that have not been touched for a long, long time. Might be it is not only that they are sad emotions that you are crying. No, there are so beautiful emotions that have lost their charm in the worldly dust. And when in these processes that we are going through, we are removing that dust away, what happens? They find their expressions again. Just like a small little baby bumbling around your house. That's what we call like bundle of joy. So similarly, what happens to you in this is you throw away everything and you find your bundle of joy within you. And it pops up like small little balloons, like bubbles that bursting around your heart. And it melts you every moment. What happens? A new bubble comes and it bursts. It gives you happiness within yourself. And when you listen to that music is keeping like, wow, this goes on in a flow. You know, what happens to you? It's a realization. If you look at a tree, when it is shedding a leaf, and you look at the leaf, how it falls. It is falling. But it dances in the swings and dance and moves and rolls and slowly comes down. You know why it does that? Because it has realized that it is time for me to go back to my source. So it dances and we cry because we don't understand why. The day it realizes that, oh, why this is a time for me, it starts dancing. You see, everything in this creation is in rhythm. If you put yourself into the rhythm, it becomes so magical, so musical. And if you are not in rhythm, then everything is troublesome. Yes. And in these 9 days, you have found your rhythm back. You look at, when I speak about rhythm, you see there is a rhythm to your breath. There is a rhythm to your thoughts. There is a rhythm to the way you look. There is a rhythm the way you are speaking. There is a rhythm the way you are feeling. So that feeling is in motion, but in rhythm. That's why there is no fight. There is calmness within. It's just like a well-oiled machinery, as per your words. A well-oiled machinery now. Now it's moving, but it is smooth. And what is smoothness? Smoothness is rhythm. And when you are in that rhythm, what connects the most, what you can resonate with very fast is the music. And your technique of pushing thoughts away, I have consciously been practicing it. Good, you And should. it's Or else really, if you have sat for 9 days and you are not practicing anything, then you no, are at loss. consciously I have practiced this. Even sitting in the office, I'm practicing. There's calmness around me. So anyway, that is that. Secondly, I want to, whoever is handling the Instagram handle, amazing job. I think we should all just get tagged onto that and get all our followers to follow Ramasmi. I don't know who's doing it, but just fabulous job. I mean, you're doing it great. So someone tagged me today, so you must have tagged me. So it's a great job. So thank you, Guruji. I'm blessed that I could do the 9-day meditation course, and it's only going to get better and better from here. Now you realize why always people pushed you to do the 9-day. Yeah. But you had not done it. Not my fault. When after I joined, you had not done it. So otherwise I would have been doing it much earlier, no? Can you see, Revati ji, you remember that changing of packet? The doctor is not wrong, the patient is not wrong, the medicine is not wrong, nothing is wrong. Still there something is wrong. So this is the same situation. Yeah. Thank you so much. Thank you, Revati ji. So finally, Janesh ji. Thank you, Revati ji. Janesh ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। जो अभी के क्वेश्चन आंसर सेशन
ये सेशन में हुआ उसी पे से ये जो विचार उद्भव हुआ है, जो ओके उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। आपने आभा जी से बात किया कि जो मंत्र रहता है उसका जो शुरू का शब्द है वो शक्ति स्वरूप है, बाकी फिर मंत्र है। तो जो भी भाषा में जो भी बात हम करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या जो भी हो, हर एक भाषा में हमारी बात के पीछे हमारी एक इमोशन है। अब चाहे मेरे शब्द के कोश में ज्यादा शब्द ना हो, कम शब्द हो, या कई कई लोग हैं जिनके पास भाषा का ज्ञान होने की वजह से शब्दकोश बड़ा है, तो क्या वो जो शब्दकोश का पोर्शन जो कम है या ज्यादा है वो महत्व रखता है, या उसके पीछे मेरी जो वो शब्द बोलते वक्त जो मेरी भावना है वो सामने वाले के जहन में जल्दी से रजिस्टर होती है ताकि मेरे शब्द बाजू पे हो जाए वेरी और गुड वो भावना समझता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जब हम किसी को कोई भी वार्तालाप करते हैं तो अगला आदमी वो वार्तालाप को अर्थ के निरर्थक में या अर्थ के अनर्थ में कैसे लेता है। ओके और दूसरी चीज ये है कि अगर ये परिस्थिति है तो हम हर एक चीज के, हर एक शब्द के पीछे हमारी शब्द रचना ऐसी है कि जिसमें हम आगे और लगा के उसका नेगेटिव स्वरूप करते हैं, जैसे कि नैतिकता और अनैतिकता। अब नैतिकता का शब्द उद्भव हुआ तो उसी के साथ आपने जो बताया था विवेक, कि एक बार साधना करते करते धीरे धीरे विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो आपको नैतिकता समझ में आती है। अब नैतिकता समझ में आ गई, विवेक जागृत हुआ, जितना जो लेवल पे है, मतलब मैं ऊपर के लेवल की बात करूं या ना करूं उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपने जो मुक्ता जी को समझाया वैसे कि चाहे मेरे पास नैतिकता समझ में आ गई, विवेक आ गया, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वही स्तर पे बात करनी है, तो क्या मैं नैतिकता सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखूं? क्या मैं मेरा विवेक सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखूं? ओके या उसका एप्लीकेशन अगर जहाँ पे, यस आपने जैसा उनको युक्ति बताई कि युक्ति से करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि सामने वाले को मिले, जैसा आपने धवल जी को बताया कि सामने वाले को एक फील गुड फैक्टर के साथ आप भेजो या एक पॉजिटिविटी के साथ कुछ दो। वैसा तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आप एक क्या बोलते एक वो परिस्थिति के अंदर वो क्षण में जो मुझे परिपूर्ण जीवन जीना है वो तो मैं नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं सब इसी में अटका रहूंगा। ओके आई मीन दिस इज समथिंग विच आई वांटेड यू टू। सो पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्या शब्दकोश में ज्यादा शब्द होना चाहिए या कम शब्द? व्हाट and is it the meaning behind it or the emotion that I put behind it? Correct. So I'm going to say something and let me know what that means. अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण गोटिका आज मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे वस्त्र बहुत ही बेकाबू हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या है उसका मतलब बताओ? इसका मतलब एक शब्द रचना है जिसका ना आपको आपको आपके मन में उसका कोई मीनिंग नहीं है, ना मेरे मन में मीनिंग है, तो मेरे को उसके ऊपर कोई रिएक्शन अंदर से फीलिंग आती नहीं। एक बात फिर से सुनिए, अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण गोटिका, मैंने कई सारे शब्द इस्तेमाल किए। फॉर व्हाट? पता है क्या है वो? मैं शर्ट के बटन के बारे में बात कर रहा था। I told in such a way that you never understood. मैंने कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। मैं कहता मेरा शर्ट का बटन टूटा हुआ है, अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रण गोटिका,
अस्त व्यस्त वस्त्र मीन्स ये कपड़ा जो इधर उधर हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए जो गोटिका लगाई गई है वो बटन. I could tell you as a button, but tell me, I used more words to describe that. Which was more effective? Button. However, there are ways. कहां पे ज्यादा शब्दों की जरूरत होती है, कहां पे छोटे शब्द की जरूरत होती है. So you should be knowing that. If you have to praise someone, you use elaborated ones. But you have to pass on a message, you use a single word. So Janesh ji, if a small little kid who doesn't knows a word also, but just say something in his broken language, do you still feel that or not? Do you still feel Yes. attracted towards it or not? Exactly. So kya ho gaya? That is my It is question. not about the words, it's Correct. about the way you are. It's not even that feeling, it's about what you are. So even that emotion plays a much better role, much bigger role. So Janesh ji, शब्दकोश से कोई मतलब नहीं पड़ता. आप अपने आप को किस तरीके से बता पाते हो, how you are able to express yourself is more important, right? Then how to deal with those situations? कि if, जैसे मैंने धवल जी को कहा कि you should speak very well to other people, right? तो उसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा. बच्चों के साथ खेले हो आप? You played with kids anytime? Yeah. Right? Have you ever become a घोड़ा or a हाथी or something like that? Yeah. Or the kid? Yes. किसी ना किसी को तो बिठाए होंगे ना कंधे के ऊपर, पीठ के ऊपर. So you put your grandchild, now all the people, those who have grandchildren, they must have for some time become horses. इंसान से घोड़े कब बन गए पता नहीं चला उन्हें. So Shiva Guruji is showing a big hand means he is going through that phase. So काफी लाड करते हैं सब. हाँ, तो एक बार सोचो जनेश जी, the moment you become a horse for the kid and you also make noises like the horse and the kid also feels like okay, he's sitting on a horse, but did you really become a horse? No. That's what I'm saying. When you are dealing with the people, I say deal with them, deal in a very beautiful way, but that doesn't mean you will forget who you are. अपने स्वरूप को नहीं भूलते हुए अगर आप उस जगह पे अपना कार्य कर पाते हो, वही दृष्टा बन जाता है. सत्य नहीं आता है ना फिर गुरुजी उसमें. क्यों सत्य नहीं आएगा? आप सत्य में घोड़े जैसा बने कि नहीं बने बताओ. नहीं गुरुजी, वो बच्चा है, उसके लिए मुझे घोड़ा बनना ही बात अलग है. जब अगर आप और मैं संवाद कर रहे हैं और अगर आप और मैं संवाद कर रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको अगर कोई न समझते हुए अगर मैं संवाद साधू, तो ये मैं आपसे सत्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ. जनेश जी, मैं भी इंसान बन के ही बात कर रहा हूँ. वही तो प्रॉब्लम है. क्योंकि आप इंसान हो. जिस दिन देवता बन गए उस दिन देवता जैसा बात करूंगा. क्योंकि आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हो, मुझे एक स्टेप उतर के आपसे बात करना ही पड़ेगा. उसी तरीके से जिस व्यक्ति से आप बात करते हो तो बच्चा है वो. यही तो मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअली यू आर इवॉल्व्ड, बट दैट पर्सन इज नॉट इवॉल्व्ड येट. सो यू हैव टू कम डाउन ए स्टेप to make them understand what you want to pass on. जैसे मैं यहाँ बैठ के आपके सवालों के उत्तर देते जा रहा हूं, एक इंसान के भांति, एक मनुष्य के भांति. क्यों? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा. But in that moment, have I forgotten who I am? No. I tell you a joke. Does that makes me a joker? No. No, I make a joke so that you understand, but at the same time, I never lose my poise. I never lose my grace. I never degrade myself. So that's what I say. Be like this, deal with people the way they are. ठीक है, पक्का समझ गया. समझ. So अब गुरुजी वो जो
विवेक और नैतिकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता के अंदर ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। तो क्या नहीं, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ या ये है, एक नैतिकता वो है जो प्राकृतिक है, जिसका ना किसी समाज से, ना किसी संस्कार से, ना किसी से लेना देना है। वो नैतिकता जो प्राकृतिक है, जो यूनिवर्सल है नैतिकता। ओके एक नैतिकता जो डिराइव्ड हुई नैतिकता है। ओके लेकिन जो जब विवेक जागृत होता है और वो नैतिकता की डेप्थ समझ में आती है, और जब हम उसको अप्लाई करने के लिए हमें संयोग मिलता है, लेकिन हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे हाथ से किसी न किसी का क्या बोलते, उसकी इमोशन बोलो या उसका अभिमान स्वाभिमान या उसकी जो भी स्टेटस है, हर एक आदमी का अपना अपना सोच है। उसको हर्ट होने के संभावनाएं बढ़ जाती है, या तो उसके साथ घर्षण होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, अगर हम नहीं करते हैं तो हम हमारे स्वस्थान के अंदर वो नैतिकता, विवेक होने के बावजूद, नैतिकता होने के बावजूद हमने वो अप्लाई नहीं किया, तो क्या हम एक तरीके से गिल्टी काम नहीं कर रहे? ओके ओके थैंक यू ये जनेश। नैतिकता और अनैतिकता कहाँ से आया जनेश जी? पहले, if you are dealing with all that, you are still coming from a place of your mind. जब आपको संपूर्णता से समझ में आ गया ना, जो कहते हो आप, जैसे आप जागृत हुए और वो सारी चीजें समझ में आई, लेकिन जब आप जागृत हुए और वो सारी चीजें समझ में आई, at the same time you should realize that all that you are doing is completely drama. Correct. And when it is all completely drama, let me handle it in the best possible way, then you speak that way. जैसे सपने में किया हुआ कार्य का फल आपको नहीं मिलता, उसी तरीके से जब आप जागृत हो जाते हो, किया हुआ कार्य का कर्म नहीं बनता। पक्का, ये मैं भी मानता हूँ गुरु जी। लेकिन जब मैं देखता हूँ, जैसे कि अभी हमारी फैमिली में राज जी एक जगह पे गए और उन्होंने इतने सारे बच्चों के लिए कुछ किया। अब वो संस्था में या जहाँ पे वो गए, वहां पे अगर एक पर्टिकुलर रिसेप्टिविटी है तो बात अलग हो जाती है। और कई जगह पे मैं ये देखता हूँ कि वो बेचारा सही में अच्छा काम कर रहा है, सही में कुछ करने की क्या बोलते, समर्पण भाव से हो रहा है चीज। लेकिन हर जगह पे कोई ना कोई रिसेप्टिविटी के अंदर उसको विध्वंस होता है। तो प्रकृति ऐसा क्यों करती है? किसकी प्रकृति? भगवान की रचाई हुई या उसकी खुद की? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएशन. Why creation sometimes disturbs a good thing which creation wants to continue with? Okay, very good. So let me ask you a very typical way of making you understand how you can understand this. Janesh ji, anytime you thought to make a movie? Yeah, I have made also. So you made also. Tell me something about your movie. I have made a couple of ad films when I was designing studios and all that. And I have made one small documentary also. Okay, what was the documentary about? The documentary was about the set of a digital age within the recording mechanism, and how the digital changes the nuances of previous understanding of our art. Okay. So you already have some kind of experience about creating ads and documentaries. Okay. If I ask you to start a movie, what ingredients will you put into the movie? First, I have to find the purpose for making a movie, which is what we call as a storyline. Okay.
So what kind of storyline will you choose? Depending on the target audience and where it needs to be done. If I want to do it for my personal gratification, then it's a separate issue. Okay. So let's say even for your self-satisfaction, if you have to take a movie, what kind of movie will you make? Can you just elaborate in a minute? क्या-क्या होगा आपके movie में? If I want to make a movie, then I will try to make a movie where I mean, few of the human emotions are which are what you call जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर कि जिसके अंदर there is an exuberation as well as there is a focus to understand that each and every human being has got a purpose, and we purposefully make it is as useless. So that means you will have two sides of life in that movie. Yes. One, that you are a human, but you are still ignorant. You have to find something. Yes. And because you have not found that, you are sad, you are bad. This is what you want to say? Yeah. That means in your movie, there should be a hero, there should be a villain. Yeah. Maybe a character or maybe a situation. Situation, yes. But what if, okay, let me tell you a story then. If you like it, you can make a movie out of it. Now, there was a student, and that student thought like he understood so many things. He got everything, he understood something. Then at times he used to ask questions to the teacher, and the teacher won't answer. And he thought that now I have become better than him. Okay. One day he asked the teacher, typical question, just like you are asking right now, no? A very typical question. वो कहता है कि if there is God, why there is so much of disparity, problem, issue in this world? Okay. Okay. Why can't be it that everyone is happy, everybody is satisfied, everybody is calm, quiet, always lives in happiness? Okay. The teacher did not answer. He said, now I am finding some good questions that the teacher is not able to answer. So every single day, what he used to do is only search for questions so that he can ask the teacher some question just to tell him that he knows, but the teacher doesn't know. And the teacher doesn't answer actually. But one fine day, he comes and says, teacher, I think whatever I have to learn from you, I have learned, let me go. The teacher says, as you like it, you can go anytime you want. And before going, he said, I want to go because you are not answering my questions. He said, which question didn't I answer yours? He said, I have been asking you so many things, and especially the first and foremost question. Can I ask you right now? He said, yes. Now, why there is so much of problem in this world when the God is there? Itne sare taklife kyun hai? Why so many issues and all the stuff? The teacher says, okay, fine, sit down, let me answer you whatever I know. And the teacher says, let me tell you a story. Now the teacher is telling another story in the story. What is the story now? The story, the teacher says, there is a place where everyone is content. Everybody lives a happy life. The king is happy, the farmer is happy. The soldier is happy because they don't have soldiers, because they don't fight. They don't have any law because nobody steals. All live happily. The person who does a labor for 30 minutes also get the same pay. Who works throughout the day also gets the same pay, because everybody is happy. The king eats the same food. The beggar eats the same food. Everything is happy. If somebody wants to marry someone, they can marry anyone. There is no stoppage. If 4 people like to marry the same girl, they can marry, no issue, because nobody says no to anyone. This is such a beautiful place. If you work for 4 days also, you get the same thing. Who works for 1 day also, he gets the same thing. And everything is happy, happy, happy.
and everybody is content. Then the student, how can it be? Can there be any such place? The teacher says, why? No, why? The king means he has to rule, he has to govern, he has to lay down certain rules so that he can take care of his things. He should have an army so that he can expand and keep his people happy. And the people, those who is working for 1 hour, should get only a wage of 1 hour. The day, a person who is working for the day, he should get the full day's work. Then why is this disparity? Then the Guru says, that's your answer. True. When you are not ready to live in a world that has equality, that has happiness, that has everything all for everyone, when you are not ready for that, how do you think your God will create it for you? True. The day you accept that the world should be like this, then your God will create that world for you. तो जनेश जी, why disparity? जब मूवी में हीरो हीरोइन ना है, वो कौन सी मूवी है बताओ? When there is no fight, there is no dance, there is no song, it's not called a movie, it's called a life. Your life is also a movie without music. Your life is also a movie. There are few villains, but you cannot call them villains. None of them is villain. So this realization is required, Janeshji. Just like you need, चाट पसंद है आपको? हाँ. चाट, पानी पूरी चाट पसंद है? अच्छा बताओ, आपको मैं पानी पूरी दूं जिसमें नमक डालना बंद कर दूं, मिर्ची डालना बंद कर दूं, I don't put any spices, any salt or anything into that, खाली आलू डाल के दे दूं, खाओगे? हाँ. बड़ा मजा भी आएगा ना खाने से? ऐसी भी खाई, बोलते हो पानी पूरी, हाँ वो अब खाए हो, लेकिन आपको याद है अभी तक कैसा लगा था? You still remember that till date. So can you think, when you eat that kind of things, you are not happy because you didn't find the expression of your senses. Correct. So in order to experience the expression of your senses, you put all the spices. God has given you the opportunity, people, surrounding, situation in your life, so that you experience all the senses of your life. And then you come into senses also, and then go beyond your senses. भगवान ने इतने लोगों को आपके चारों तरफ बनाया इसीलिए है कि ताकि आप ये सारे चीजों को अनुभूति कर सको, अनुभव कर सको. True. And those are just like chaat masala for me. Some people come make me happy, some people come will try to make me sad, some people will dance in front of me, some people will roll down and cry, some people will jump will scream, but all that I see is just chaat masala for me, and I taste it so well, it tastes so good, and I enjoy the chat. True. So learn to enjoy the chat. Learn to enjoy your life with all these ups and downs and goods and bad and sorrows and livelihood and happiness and things and all that, all the people. Enjoy. You are on a vacation. Yes, that is true. Then enjoy and the it food. is a good vacation. Enjoy it's a the good menu. vacation. It's an excellent vacation, no doubt about it. No doubt about it. So, I believe Janesh ji मैंने सारे उत्तर दिए आपके. हाँ नहीं वो जो मैं मुझे चाहिए था उससे भी ज्यादा. चलो, इसीलिए हम अपने आप को भगवान कहते हैं, हम छप्पर फाड़ के देते हैं. चलो, thank you so much for all your questions and all of you being here, and thank you for allowing me to express my true self again. यहाँ आके मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जाहिर कर सकता हूँ, अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ. And it only happens in your presence. That means your greatness. So thank you. And most probably, as I said, we might be doing the session on Saturday morning instead of Sunday, because I have a flight on Saturday itself, but I will complete it early and then I will move out.
And even if that is not possible, I'll do it on Friday then. Okay, so whatever it is, but you have to come up with 3-4 balloons. Okay, so that it happens practically. Everybody understands it practically and you can teach it to anyone. Okay, so thank you so much. Till we meet again. And Mamtaji, your question was left out. I don't know. But the day I speak about karma, when you are talking about the child, what if a child dies? Is it really because of the karma or is it because of something else? So I have a very beautiful answer for that also. But do ask me on the next question and answer session. I will be more than happy to answer that. Okay. So Mamtaji, it will take some time to elaborate, but it has a beautiful answer for that also. See, in my creation, whatever you bring, I make it beautiful. That's what I am, and that's what I will make you too. A unpolished rock, chiseled well, and looks like God. Thank you so much. See you again within a short span. Till then, enjoy your vacation.